सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हाँ, प्रोग्राम पाबंदी से ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये आपकी अपनी आवाज़ है, आपकी अपनी पहचान है। और कहते हैं कि राब्तों का एक नाम ऑफ कोर्स सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज एक मैं स्टोरी लेकर आया हूँ बहुत दूर दराज से, यानी कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, और उसका एक और शहर है ओकाला। ऑरलैंडो से 1 घंटे की ड्राइव है ओकाला। ओकाला में एक बहुत ही अहमियत के हामिल जो है फैमिली रहती है, और आप भी उनसे वाकिफ़ होंगे। और कार्डियोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और उनका नाम है डॉक्टर असद कमर, और उनकी मिसेज़ डॉक्टर हुमैरा कमर। उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह विद इन 2 वीक। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर असद कमर साहब से। असद कमर जो है वो अपना के कैंडिडेट भी रहे हैं सदर के, लेकिन मैंने उनको कभी इंटरव्यू नहीं किया, कभी मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन उनसे उनके प्रोफेशन से मुतालिक इंटरव्यू करूँगा। ओकाला गया, और ओकाला में मैंने उनके क्लिनिक और उनके इंस्टीट्यूट का मैंने जो है दौरा किया। इट्स नेम इज़ आइस, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक एक्सेलेंस। It's a 2 major cath lab, very modernized, state of the art, and I hardly seen that kind of cath labs, which is really equipped with every technology you name it. यूँ तो असद कमर की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बहुत जनरस हैं, बहुत शफीक हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और नहायत ही प्रोफेशनल हैं। Whenever I try to contact him, he's always in cath lab. He enters at 6 in the morning until 10 p.m. the midnight. He is working. And of course, saving the life. कार्डियोलॉजिस्ट का काम है of course, और ये बहुत ही इमरजेंसी होती है हार्ट की। एक हार्ट ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी को पंप करता है, आपकी पूरी बॉडी को चलाता है, और अगर वही ख़राब हो जाए तो ज़िंदगी से आप किनारा कश हो जाते हैं और ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाती है। जैसा कि मुझे बताया है असद कमर ने कि इतने लोग जंग में और टेररिस्ट से मारे नहीं जाते हैं जितने लोग कार्डियक डिजीज़ से जो है इंतकाल फरमाए जाते हैं, और हज़ारों लोग इसमें मारे जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो टाइमली मैनर्स ट्रीट ना करें और अपना चेकअप ना कराएं और डॉक्टर से राब्ते में ना रहें, तो उनका पता नहीं कि उनके बॉडी में क्या पल रहा है। और यही सारी बातें हमने असद कमर से की हैं। हमने इनकी लैब का भी दौरा किया। असद कमर एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और नहायत ही मशाक और प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और इनका काम मैंने अपनी आंखों से करीब से देखा है, और इनके साथ मैंने काफ़ी सफ़र भी किया है। और ख़ुशी की बात यह है कि डेफिनेटली ओबामा से भी बड़े इनकी क्लोज रिलेशनशिप है। ही ऑलवेज इन DC एंड इज़ वन ऑफ द चेयर ऑफ द ओबामा केयर। दैट्स ए वेरी ऑनर फॉर अस। और मैं समझता हूँ कि असद कमर जैसे बहुत से लोग हमें चाहिए अपनी कम्युनिटी के अंदर, जो अपने प्रोफेशन में भी मशाक हों और मुकामी पॉलिटिक्स और मुकामी मेन स्ट्रीम में भी अपना अमल दखल रखें। नादीन, आइए आपको लिए चलता हूँ मैं ओकाला, और वहाँ आप मुलाकात करेंगे डॉक्टर असद कमर से, और आपको एक मैं टूर दूंगा आइस, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक एक्सेलेंस। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी किस्म का कार्डियक इंस्टीट्यूट बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ताकि वो अपनी खिदमात वहाँ भी अदा कर सकें बहैसियत पाकिस्तानी के। और कहते हैं कि हमें अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना है। नाज़रीन, आइए तो हम सब मिलकर देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री और ये रिपोर्ट
जो आपके लिए सफ़ीर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की है, और ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी वक्त लगा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिपोर्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। Dr. Asad Qamar now performing the angiogram of the patient. Okay, how much time does it take angiogram? An angiogram, as you saw, really took us about 10 minutes. Okay. And in this particular situation, this young lady, her symptoms were quite atypical. She has discomfort in the high up in the abdomen, actually, not in the chest. Okay. Now, sometimes that can also be coronary artery disease, but she doesn't have any blockages in the coronary arteries. She actually has a blockage in the celiac artery, which is very unusual for a young person. So she feel kind of discomfort or burning or something? Right. What she has is called median arcuate ligament syndrome, which is a very unusual condition where the muscle of the diaphragm is actually pinching one of the arteries. So we will look into how we are going to treat it. He's a great doctor. All the patients love him. He's very in tune to what the patient's needs are and to take care of their needs. I mean, if you could interview the patients, lots of them just adore him. He is a wonderful man to work with. Very patient, very kind. He's amazing. Amazing. I've seen him do some pretty amazing things around here. Really? Yes, sir. I've seen people with non-healing ulcers come back full recovery, being able to walk. We've seen some pretty amazing stuff. I've worked with Dr. Qamar for a couple years now, and he's a highly skilled interventional cardiologist. He's a lovely man. He cares about his patients' outcome. Continuum of care is very important to him, and you know, his patients just love him. So he's definitely a like she said, very highly skilled and a super nice man. Does a lot of things for his patients, and he's a great physician. He's very compassionate, cares about his patients.
highly skilled and intelligent, and does an amazing job to care about his patients and his employees. I met Dr. Cummer back in 2008 when we opened our company. I had heard of this cardiologist up in Ocala, and I wanted to see the possibility of doing business with him for our magazines. And I found a very humble human being, very passionate about what he was doing, and treated me like I would want to be treated. And it was just a wonderful experience to see a doctor that busy, but yet that compassionate, to have come out and did what he did was amazing to me. I hear those stories. I hear the life-changing stories of no mobility to 100% mobility, of golfing, bowling, going out to eat with their friends, the lives that have been changed. Dr. Cummer is a leading cardiologist. He is in the top percentile in the country in the number of catheterizations and the peripheral disease that he fixes. And a lot of patients come even from, let's say, Michigan. We have patients coming from Georgia just to see Dr. Cummer. They make appointments and he's their cardiologist, even though they live that far away. The model of ICE is where we offer all of the diagnostic care, clinic care, cardiac care in under one roof. So the patient doesn't have the inconvenience of going to 10 different places to be cared for. They can come and see their provider, their doctor, at one location. The doctor, for example, requests a blood work. The patient can be in this same facility for the blood work. The patient can have a CT scan, can have a cath done in the same facility, and it's very convenient for the patient. And that's our model to give compassionate, innovative care. डॉक्टर असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकार कैसे साहब, मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू आवर ऑफिस। Yeah, just long time we are working almost a year and a half जी जी बिल्कुल। to come to this position today. First of all, thank you very much कि आपने मौका दिया सफ़ीर पाकिस्तान को, जियो को, कि आज आपसे बातचीत हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप उस मरहले में थे तो उस दौरान हम इंटरव्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमें पूरी अपॉर्चुनिटी है हम आपसे खुल कर बातचीत करें। सबसे पहले तो मुझे ये होता है कि मैं अपने जिससे भी मैं इंटरव्यू करता हूँ उससे पूछता हूँ कि वो अपने बारे में खुद बताए हमारे नाज़रीन को कि आपने कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ से आप कैसे अमेरिका आए और क्यों अमेरिका आए, आप क्यों यूरोप ना चले गए और गल्फ़ का रास्ता आपने क्यों इख्तियार नहीं किया और आपको क्यों इतनी चाहत थी कि आप अमेरिका आएँ, आपका मुल्क भी बहुत बड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि क्या वजूहत थी। और जब पाकिस्तान में रहे आपने, अपने जब MBBS कर लिया उसके बाद आपने कितना अर्सा पाकिस्तान में लगाया, तो ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल वकार साहब, पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। यू ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे यहाँ आने के लिए फ्लोरिडा में। मेरी बहुत हम्बल बिगिनिंग्स हैं, पाकिस्तान से ऑब्वियसली हूँ मैं। मैंने अर्ली स्कूलिंग जो थी मेरी वो कॉन्वेंट स्कूल में थी बहावलपुर में, उसके बाद सादे पब्लिक स्कूल में बहावलपुर में, उसके बाद अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में लाहौर में, और उसके बाद वहाँ से जब मैंने ग्रेजुएट किया विच वाज इन 1987, तो फिर मैंने इंटर्नशिप की सर्जरी में और इंटरनल मेडिसिन में सर्विसेज हॉस्पिटल में, और उसके बाद आई वेंट टू आयरलैंड कुछ अरसे के लिए। वहाँ पे रॉयल एडलेड हॉस्पिटल में डबलिन में मैंने काम किया, और उसके बाद आई केम टू यूनाइटेड स्टेट्स कनेटिकट
और फिर ब्रिजपोर्ट हॉस्पिटल से, विच इज़ ए येल हेल्थ प्लान हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने फिर इंटर्नशिप और रेजिडेंसी की इंटरनल मेडिसिन में, और फिर नॉन इन्वेसिव और फिर इन्वेसिव और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में फेलोशिप की वहाँ से। तो ये आपकी देरीना ख्वाहिश थी कि यू गोना बी बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट? नहीं, दरअसल सच्ची बात तो ये है कि आई वॉज नॉट अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, जिसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। आई हैड अ वेरी गुड टाइम इन मेडिकल कॉलेज, बल्कि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं नहीं, मैं यंगस्टर्स को यही बताता हूँ कि एज़ यू आर इन अ प्रोफेशनल कॉलेज, लाइफ इज़ ऑल्सो पासिंग। तो हर वक्त किताबों के साथ रहना भी ठीक नहीं है फॉर योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। तो मैं जब स्कूल में था, I cannot say that I was very studious. I certainly paid attention to my studies, and I had the eventual goal that you know, I'll become a professional. I wasn't sure कि मैं medicine करूँगा। मेरे वालिद जो हैं, he is a surgeon, a general surgeon, बहावलपुर में हैं, डॉक्टर रफ़ी कमर। He is still practicing? जी, he is still practicing. He is 80 years of age, मगर माशाल्लाह he is very active. And he enjoys his work. तो उन्होंने he encouraged my sister Fawzia, जो कि अब Connecticut में इस वक्त anesthesiologist हैं, कि medical school में जाएं। उसके बाद my brother Nurullah, he went to medical school, और he's an orthopedic surgeon बहावलपुर में। Then my sister Sadia, she's a pathologist in Louisiana, और उसके बाद मैं So I was the youngest of the clan. डैडी के नक्शे कदम पे चल पड़े। जी जी, मेरे दो half brothers भी हैं। आसिम, he is a physician, और उमैर, आसिम is in Pakistan, उमैर is here, he is an internist Baylor में। तो we are actually 6 of us, and all 6 of us are physicians. Excellent. जी, तो आपने मुझसे पूछा कि when did I decide on doing cardiology? हाँ, तो मेरे वालिद जो हैं, he is a surgeon. He obviously was biased कि मैं surgery में जाऊँ, मगर surgery did not attract me because it somehow, my apologies to the surgeons, it seemed to me like a very basic, primitive kind of thing. You cut and you sew and you throw things out and stuff like that. उसमें कोई miniaturized devices वगैरह, खैर अब तो बहुत कुछ आ गया। There are robotics involved in surgery and whatnot. Everything is becoming nanotechnology. But I think when I got excited about cardiology was when I did my first rotation in the coronary care unit services hospital में Pakistan में, and then later on doing my internship in general medicine in United States, I realized that I had a passion for cardiology. So that is very exciting, especially the invasive and interventional part of it, जो कि आप catheter-based technologies हैं, those are very attractive to me. अच्छा अच्छा अच्छा, तो you decided to come to America. That was the goal. जी, उसमें भी ये था कि once I gave up on surgery, my father thought that I was sort of throwing away my life by going into medicine. और फिर उसके बाद जब मैंने, क्योंकि he trained in England, when I decided to leave Ireland and come to United States, तो वो समझे कि शायद I was making a huge mistake because he was more sort of aligned with the British system. So anyways, I came to United States, and then basically here I really found what I had the passion for, and since then I've been doing it. I see. So अब जो माशाल्लाह आपकी अपनी फैसिलिटी है आइस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर, इससे पहले कहाँ थे आप? कहने के आपके क्लिनिक थे? इससे पहले दरअसल when I finished my fellowship, I really wanted to work in a cath lab. So I had done a paper on cardiac injury markers. उसको मैंने present किया था American College of Cardiology की annual meeting में। तो वहाँ पे I was approached by somebody that I didn't even know, or all he asked me was, whether I would be interested in directing a cardiac cath lab in Ocala, Florida. I didn't even know कि Ocala कहाँ पे है, मगर the very excitement
of knowing that, just straight coming out of a fellowship, you can direct a cardiac cath lab. That was enough for me to say yes. So then I came to Ocala. I directed a cardiac cath lab here at the Marion Cardiovascular Institute. फिर वहाँ से I worked for some time with Central Florida Heart Center. Or then finally, I had this passion that I should have my own cardiac cath labs and in an atmosphere where I can provide a comprehensive cardiovascular care. And my passion was vascular more than cardiac because, So you you have a what percentage of cardio or vascular? I'll tell you, Waqar Sahib, and it's changing in United States also. Vascular will become the predominant disease compared with coronary. Coronary is also a vascular disease, but we call it coronary just to kind of distinguish between the other vascular distributions versus the coronary distribution. Magar ye hai कि our 70-80% of the volume is vascular compared with coronary. Coronary mein ye hai कि every other coronary case is pretty much the same. Vascular mein there is the excitement of figuring out how you will approach a lesion. You have a much bigger armamentarium of different, instruments and equipments that you can use. So I find it very exciting and challenging. तो उसमें यह है कि carotid stenting हम लोग करते हैं. We also do neurovascular intervention in the brain. Oh, really? G. We do all sorts of thoracic aortic interventions, abdominal aortic aneurysms. Renal artery की blockages को treat करते हैं, mesenteric और celiac arteries की blockages, erectile dysfunction के लिए internal iliac arteries, और फिर lower extremities limb salvage work. So you can imagine your vascular distribution, it is so large compared with the coronary. So it is. So how they diagnose these things? I know heart का तो diagnose होता है कि pain हो रहा है, chest pain हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, और cholesterol check कर लेते हैं कि it is very high. और कैल्शियम डिपॉजिट बहुत है, लेकिन जो दूसरी वैस्कुलर है उसको कैसे आप डायग्नोस करते हैं? पहले तो वकार साहब, दी वैस्कुलर डिजीज़ इज़ द सेम, चाहे वो कॉरोनरीज में हो, चाहे कैरोटिड्स में, चाहे सेरिब्रल हो, और एनीवेयर इन द बॉडी. उसके रिस्क फैक्टर्स भी वही हैं, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, जेनेटिक्स, और उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी वही है. Magar in terms of symptoms, obviously symptoms are location specific. So legs mein jo arterial disease hai, that may present with symptoms peculiar to the legs. Similarly, internal iliac ki disease hai, wo erectile dysfunction se present karti hai. Mesenteric artery ki blockages mein abdominal pain hota hai khane ke baad. Renal artery की blockages में blood pressure is very high, erratic blood pressure, या abnormal renal function हो जाता है. And similarly carotid में patients may have जिसको TIA कहते हैं, और mini strokes, they can have experienced those. So diagnosis initially we do non-invasively, जिसमें usually ultrasound of the affected region can be very helpful. उसके अलावा you can do a CTA, which is a CAT scan angiogram. Full body scan. जी, या MRA कर सकते हैं, और उसके बाद फिर of course when you are planning to treat it, you do an angiogram of the particular area and then plan treatment accordingly. तो आप लेग में जाते हैं, you go through heart? जी, उसमें when you एंजियोग्राम के लिए जो मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ से हम एक्सेस करते हैं सर्कुलेशन को, वो तो फेमरल आर्टरी होती है, जो कि ग्रॉइन में होती है. तो जब when you are imaging the legs, you obviously image from the aorta, or you can go contralateral on the other side and put a catheter all the way down in the popliteal artery. या अगर आप images carotids के कर रहे हैं तो obviously you will go to the aortic arch और वहाँ से images लेंगे. Coronaries, we don't have to go through the heart. अगर आप coronaries के images ले रहे हैं तो तब आप aorta में जाके coronary arteries की images लेके thoracic aorta से, उसके बाद you put a catheter in the
right or the left ventricle, depending upon what kind of catheterization you're doing. So मगर जो basic principles हैं angiography के, they are very very similar, और equipment is also very similar. Definitely, yeah, definitely. I've seen in cath lab you're doing this legs work. जी जी. That's very important for the diabetic patient. बिल्कुल, diabetics के लिए, smokers के लिए, especially, I mean, these two groups, and especially if a diabetic patient smokes, that is a double whammy. तो वो जो हाँ, एक है, बात अक्सर अगर heart में burning हो तो it's also heart related. certainly, anginal threshold जो है वो lower हो जाता है खाने के बाद, because there is shunting of blood to the gastrointestinal tract. तो उसमें angina के symptoms हो सकते हैं. मगर अक्सर अगर abdominal discomfort हो या upper abdominal pain हो, तो it can be a stenosis of the celiac artery or the mesenteric artery, वो भी possible है. अच्छा अच्छा, जी. तो डॉक्टर माशाल्लाह, आप कैसा, आपका किस तरह चल रहा है काम का? बहुत बिजी है. आपका है ये जी. इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर, जब से आपने इसको 3 साल हो गए आपको शुरू किए हुए. जी जी. Waqar Sahab, it has been very successful. We get patients all the way from Orlando going south, which is a good 70-80 miles, or north में we get patients all the way from the Georgia border. और इसके अलावा we do get patients जो कि बहुत दूर से भी आते हैं, from out of state. Especially दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, 3 बल्कि मैं कहूँगा, जिनमें आउट ऑफ स्टेट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फॉर प्रोसीजर्स. एक तो लिम्ब सैल्वेज है, जिसमें पेशेंट्स को बताया गया है कि दे रिक्वायर एन एम्प्यूटेशन और कोई चारा नहीं है, सर्जरी नहीं हो सकती, आर्टीरियल ब्लॉकेजेस को लेग्स में नहीं खोला जा सकता. मोस्टली दीज पेशेंट्स आर आइदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबेटिक्स और स्मोकर्स, और दे हैव एंड स्टेज रीनल डिजीज़, क्योंकि जो डायलिसिस पे पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हैवी कैल्सिफिकेशन होती है ऑफ दी लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टरीज़. तो ये वो लोग होते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ एज ए लास्ट रिजॉर्ट दे सीक हेल्प. तो दे नो अबाउट अस थ्रू द मीडिया, and then then they contact us for limb salvage procedures. दूसरे हैं जो कि abdominal या आप कह लें visceral stenosis के patients हैं, celiac artery के या mesenteric artery की blockages के, वो भी आते हैं हमारे पास from distance और out of state. और तीसरा जो group है वो जो कि बहुत ज़्यादा rapidly increasing group है, वो males with erectile dysfunction बहुत आते हैं, जिसमें हम iliac arteries की interventions करते हैं. अच्छा, very good. It's like a very wide field. जी जी. The vascular. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें definitely legs का diabetic is very important when they feel the numbness or weakness or tingling or pain or neuropathy or something. So that's the sign. So you have to contact the doctor. जी, आप सही कह रहे हैं. और उसमें पेशेंट्स शुड बी केयरफुल. वो जो क्लासिक लेग पेन है अपॉन वॉकिंग, वो होती है अबाउट 50% of the patients have what we call claudication. मगर just like you can have significant blockages in the coronary arteries without having any chest pain at all, इसी तरह से silent PAD जो है वो बहुत common है, especially जब neuropathy develop हो जाती है diabetes में and there is loss of sensation, then patients don't have a clue. या हमारे जो CKD के chronic kidney disease के या end stage renal disease के जो patients हैं, उनको भी neuropathy होती है, तो उनको भी कोई feeling नहीं होती, and they don't have pain. So the absence of pain does not rule out significant peripheral arterial disease. अच्छा अच्छा जी. तो कितने आपके प्रोसीजर करते हैं monthly? How many procedure are you going through? वकार साहब, मैं कार्डियक कैथ लैब में होता हूँ 3 days a week. अच्छा, 3 days. जी. और on each day we do about 25 cases. तो तकरीबन 75 cases a week times 4, which makes what, about 300 cases a month we do. 300 cases तो सर बड़े हॉस्पिटल करते हैं. हाँ, नहीं, I absolutely agree with you. We are a very very high volume, very busy practice, because हमारी जो patient population है local, not talking about the outside referrals. आप देखिए कि around Ocala there is nothing but large retirement communities.
एक रिटायरमेंट कम्युनिटी विलेजेस है, उसमें देर आर 100,000 यानी 1,00,000 पेशेंट्स हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे 70,000 पेशेंट्स हैं। जो बहुत छोटी भी रिटायरमेंट कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह से आप ओक हिल है यहाँ पे, वहाँ पे 10,000 पेशेंट्स हैं। सो these are very very large retirement communities concentrated, and we have the older population, and this is the generation जिसने स्मोक किया है बहुत ज़्यादा। तो ये उस ज़माने की जनरेशन है। इवन इफ़ दे हैव गिवन अप ऑन स्मोकिंग, दे हैव स्मोक्ड, यू नो, इनकी पैक ईयर हिस्ट्री अगर आप देखें तो 2 or 3 packs a day for 40, 50, 60 years लोगों ने स्मोक किया हुआ है। and a lot of them are active smokers। फिर ऊपर से of course, you know, there is rampant obesity in United States। obesity तो नहीं कहना चाहिए, it's a derogatory term, but I would say that, you know, they have very high BMI, or, you know, basically body mass index। तो उस वजह से diabetes का incidence बहुत ज़्यादा है, poorly controlled diabetes or insulin dependent diabetes, so that those are the risk factors for our patient population। Okay। So इसमें ये है कि why you have chosen Ocala? You got the residency here, or you got the jobs here? नहीं, मैं तो आपको मालूम है, I trained in you know, ये मेरा ओकेला आना was accidental, क्योंकि you know, मैंने बताया आपको, this particular gentleman approached me, which worked out very well for me, क्योंकि मैं जब आया था United States, I was on a J1 visa। J1 is a visa, an exchange visa। सुना रहे थे मुझे। जी, तो उसमें आप जो हैं, you have to get a sponsorship, and actually it turned out that Marion County जो Ocala है, it is not anymore, but it used to be an underserved area। So then I came here, and I sort of was able to do my, you know, both get my permanent residency as well as, you know, train here। I was very passionate about going back to Pakistan like everybody else is। Yes. And I did try hard, but for reasons that we can discuss, it just didn't work out। I see। जी। Okay। आप कोई ऐसी एडवाइस दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस डॉक्यूमेंट्री आई एम डूइंग ऑन यू, कि दिल के अमराज से कैसे बचा जाए, ब्रीफ, और डायबिटिक्स का क्या रोल है हार्ट के अंदर? Sure। I think सबसे important तो चीज़ है focusing on the lipids, which is cholesterol, because no matter what other risk factors you have, whether you're a smoker, whether you're a diabetic, whether you have genetic predisposition for cardiovascular disease, at the end of the day, or hypertensive, तमाम चीज़ें जो हैं उनका जो final weapon है वो lipid molecule है। In the absence of a cholesterol molecule, you cannot create plaque, you know, in vivo, in the body, or in vitro। So in other words, you have to, lipids are central to the pathogenesis of atherosclerosis। तो उसमें जो LDL molecule होता है, it enters through the endothelium, जो inner lining होती है arteries की, और जो subintimal space होती है उसमें चला जाता है, फिर वो oxidize होता है। Oxidized LDL जो है, it's a very potent chemoattractant, और उससे macrophages जो certain cells होते हैं बॉडी को जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो आते हैं and they engulf those LDL particles। मगर जो ऑक्सीडाइज्ड LDL होता है वो टॉक्सिक होता है उन macrophages के लिए। तो macrophages, they become large foam cells, they sort of become वो इतना imbibe कर लेते हैं LDL के, they become swollen, then they rupture। उनसे जो cellular elements और cytokines release होते हैं locally, वो फिर और T lymphocytes को ले आते हैं। So there is this inflammatory party going on in the subintimal space। तो अगर आप उसको समझ लें, the pathogenesis of atherosclerosis, तो बड़ी easily समझ आ जाता है कि आपको LDL को दुनिया इधर की उधर हो जाए, you have to bring it down as low as possible। बल्कि शुरू में ये था कि LDL जो है क्या LDL को कंट्रोल करने से can you
It was actually almost believed with certainty कि आप एथेरोस्क्लेरोसिस को रोक नहीं सकते. तो ये था शुरू में कि क्या आप स्टैटिन से इसको स्लो कर सकते हैं. We found out that we can do that. There are many large trials in the beginning which showed us कि आप slow कर सकते हैं. Then the second question was कि क्या आप actually उसको halt कर सकते हैं pre-existing atherosclerosis और plaque को और plaque volume को. तो that was also proven कि yes. And then final जो frontier था वो ये था कि whether you can actually regress a pre-existing plaque. तो उसमें 2 large trials हैं. Asteroid is one of the trials जिसमें Crestor को यूज़ किया गया था, या Reversal है trial जिसमें high dose Lipitor यूज़ हुई थी, और उसमें intravascular ultrasound से plaque volume को measure किया गया था. तो you actually can within an 18-month period see significant regression of plaque. ये तो हो गया mechanical element कि आप plaque को regress कर रहे हैं, मगर उसका एक chemical element जो है वो बहुत important है कि each plaque is not the same. 90% stenosis हम जानते हैं which is stable and is not chemically active or inflammatory, is not as dangerous as a 50% plaque which has certain characteristics and has high grade inflammatory material on the inside. Because plaque जो होता है, it's like a volcano which is ready to erupt and cause a thrombus in the artery. तो chemical milieu भी change हो जाता है plaque का towards favorable by high dose statin therapy, or mechanically भी you can decrease the volume of the plaque. So statins are a critical element. So एक तो lipid lowering हो गई. आपने मुझसे पूछा था कि क्या किया जाए generally. बाकी चीज़ें आसान हैं. Control of hypertension. We have so many wonderful medicines available in this day and age. And usually it's combination therapy. ये patients जो हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा psychologically involve हो जाते हैं कि मैं सिर्फ एक दवाई लूँगा, 2 नहीं लूँगा, और या 2 या 3 ले रहा हूँ तो बड़ी dangerous बात है. We know from the Joint National Commission on Control of High Blood Pressure कि actually low dose में combination therapy of antihypertensive medications with different mechanisms of action वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप एक एजेंट को बहुत हाई डोज में लें. तीसरी चीज़ डायबिटीज़ आ गई. इट इज़ क्रिटिकल के हीमोग्लोबिन A1C को 6.5 या उससे नीचे रखा जाए. प्रिवेंशन ऑफ ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ क्रिटिकल. जितने प्री डायबिटिक्स हैं उनको देर आर मेडिसिन्स दे शुड बी टेकिंग फॉर एक्चुअल प्रिवेंशन ऑफ ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि इट्स अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. blood sugar slowly is creeping up. It doesn't make any sense कि आप उसको treat करें when it reaches a certain point, because उस वक्त तक आपके 50, 60, 70% of the beta cells are dead already. You should start treating it at a very early stage when the hemoglobin A1C is in the 5.7 or so range. बहुत early treatment होना चाहिए. उससे आप beta cells को rejuvenate कर सकते हैं. You can add a decade or so or more actually. और 7-8 चलाया तो फिर? Exactly. I mean, you should not let it. मैं आपको अपनी example देता हूँ. And I have absolutely no sort of shame in sharing it. My dad is a type 2 diabetic. आज से 10 साल पहले, right on my 40th birthday, my hemoglobin A1C was 5.9. Knowing that I have the gene for type 2 diabetes, it was abundantly clear to me that if I don't do anything, I will become a type 2 diabetic. So in addition to obviously lifestyle modification, exercise, weight control and whatnot, and diet, I started taking Actos, which is a TZD, pioglitazone, 15 milligrams, 15 milligrams a day. And I've taken it for the entire decade, last decade. Or when Januvia became available, which is a DPP4 inhibitor, तो मैंने उसको add कर लिया. And the other day, and I'm turning 50 actually in January, so it's a decade of a sort of a trial on myself. My hemoglobin A1C is 5.6. So I have... You take now Januvia? I take the combination of Januvia with Actos. But what I'm trying to say is... Actos has caused some problem. Yeah, they're overstated. We do know that Actos has an excellent track record
in terms of a prevention of macroscopic or macrovascular disease. अगर आप इसको high doses में लें and in patients with congestive heart failure, वरना तो कोई भी drugs आपको 1-800 नंबर television पे नज़र आ जाएगा because you know drugs make money. बल्कि आप you will see ads, negative ads against drugs. अगर आपका किसी बंदे का A1C बढ़ जाता है जी जी तो उसको reduce करने के लिए क्या करना है? Insulin sensitizers are critical. It is a terrible mistake to use sulfonylureas and keep flogging the pancreas to produce more insulin. That is really not the way to go. Metformin or glipizide. Metformin is a good drug. There is no question about it. Glipizide is a sulfonylurea. You know, at a certain stage in diabetes, you will need a secretagogue, meaning something that produces more insulin. Magar ye hai ke from a cardiovascular standpoint, if you're talking about, you know, lowering blood sugar is one thing, but at the end of the day, what kills a diabetic is macrovascular disease, coronary artery disease, carotid vascular disease, cerebrovascular disease. So the point I'm trying to make is कि ऐसी drugs use करें जो कि ना सिर्फ आपकी blood sugar को improve करें बल्कि आपको insulin sensitization provide करें and more importantly उसके through ये जो hyperinsulinemia होता है which is the actual dangerous thing or postprandial hyperglycemia which is the very high blood sugar right after eating, those are the things which cause macrovascular disease, unko prevent kare. So I would, in my humble opinion, drugs like metformin, drugs like a TZD such as Actos, drugs like Januvia or Onglyza, these are the ones to use very, very early on in pre-diabetics. And control your food. Of course. Your diet is critical and of course the level of physical activity, that's critical. I see. साहब ये तो डेफिनेटली आपने बताएं प्रिवेंशन और सब चीज़ें अपने हार्ट के बारे में और डायबिटीज़ के बारे में. अभी बताइए कि जो आपका आइस है जी जी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर, ये इसे क्या सेटिस्फैक्शन क्या है इसकी, व्हाट हाउ पीपल फील अबाउट दिस और कैसे इसको रेट करते हैं लोग? आपके पास इतने माशाल्लाह पेशेंट आ रहे हैं, कोई वजह तो होगी. जी वकार साहब, एक तो आई प्राइड फर्स्ट ऑफ ऑल let me tell you okay, you know, I am just one person and I could not have obviously accomplished all this. So I want to thank everybody who has helped me on the way, and that starts from my teachers, you know, school mein when I used to be a very non-serious student from the college days and you know whatnot, and obviously my parents who have certainly been very loving and kind and they've supported me in every way. And then of course my wife, who was really very, very, very instrumental in helping me create ICE, because she really, I was so busy with work that this entire thing was created by her actually. And then of course our children who have given me all the support and also allowed me the time that I've taken away from them during this arduous task. But having said that, I have an incredible staff who are very, very patient focused. They're very loyal. And very professional. And I have wonderful colleagues with me. So I'm very blessed. We try to marry the old-fashioned care of focusing on the human aspect of a patient, and then marry that with the latest technology and whatever, you know, professionally we can do for them in our training and experience. And I think if you do this, the old-fashioned care with the new approach of technology and science, I think that really is the key. It guarantees success, basically. Put yourself in business for less than $100. Search a domain name. Earn income 24/7. If you already have a domain name, no problem, you can transfer the name. Register the name on www.razahosting.com. You can do all this yourself by using our user-friendly website. If you need any help, our experienced and helpful salespeople will be glad to help you. Just call
713-981-5500. सफ़ीर पाकिस्तान की खुसूसी पेशकश 23 मार्च के हवाले से क्या कायद आज़म का पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है? क्या पाकिस्तानी अवाम ने अल्लामा इक़बाल के ख्वाब की ताबीर पाली है? अपनी राय का इजहार करके अपना पैगाम रिकॉर्ड कराएं या हमारे मुकामी नुमाइंदों से रब्ता करें और अपना खुसूसी पैगाम ज़रूर रिकॉर्ड कराएं और अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना और इसमें इश्तिहार देना चाहते हैं तो भी हमारे नुमाइंदों से रब्ता कायम कीजिए या सफ़ीर पाकिस्तान को कॉल कीजिए 909-489-2289। Kaba Fusion is a specialty pharmacy that focuses on infusion therapy. Our primary focus is IVIG intravenous therapy for patients with neuromuscular disorders such as Alzheimer's, MS, CIDP, and patients with primary immunodeficiencies. We also specialize in acute therapies such as IV antibiotics, TPN nutrition, hydration, pain management, and PICC line placement. We have 3 pharmacies located in Los Angeles, California, Dallas, Texas, and Newark, New Jersey. The company is a pharmacist owned with leadership that has over 20 years of expertise in IVIG within the healthcare industry. We are also paired with our own home healthcare agency consisting of skilled nurses who are trained in the monitoring of IVIG or acute infusion and PICC line placement. We are a preferred Blue Cross provider and are able to provide service in 25 states with a 24-hour turnover in delivery. Our duty is to provide premium specialty in-home infusion. Our goal is to provide patient-focused, compassionate care. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Sharmar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. मेज़बान बिरयानी सेंटर, जायकेदार, मज़ेदार, खुशबूदार, 100% ज़बिया हलाल मुगलाई खाने, हैदराबादी और पाकिस्तानी खानों का वाहिद मरकज़। पार्टी और कैटरिंग के माहिर, साल का तजुर्बा और आला खिदमत के साथ बेमिसाल मेज़बान। Come to मेज़बान and eat halal food. नाज़रीन, तो आपने देखी ये एक रिपोर्ट, एक मुलाकात डॉक्टर असद कमर साहब से। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में भी कुछ इजाफा हुआ होगा। असद कमर जैसे लोग जो हैं हमें चाहिए। हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन ब्रिलियंट लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो मामूली स्कूलों से पढ़ कर आए और अपनी ज़िंदगी को यहाँ बनाया और चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए अपना नाम बुलंद किया, अपने मुल्क का नाम बुलंद किया, अपने स्कूल का, कॉलेज का नाम बुलंद किया। नाज़रीन, ऐसी किस्म की कोई स्टोरी अगर आपके पास भी हो तो आप सफ़ीर पाकिस्तान से राब्ते में रहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।